नमस्कार व्यूअर्स, अभिषेक अरोड़ा दिस साइड फ्रॉम ए स्क्वायर प्रॉपर्टी स्टोर। आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने लेके जा रहा हूँ विच इज़ लोकेटेड ऑन अ वेरी प्राइम लोकेशन। पचपेड़ी कहते हैं इस जगह को, सिविल लाइन जबलपुर। और जो मैं आपको आज बंगलो दिखाने लेके जा रहा हूँ विच इज़ लोकेटेड एट पचपड़ी रोड ओनली। एंड यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एयरपोर्ट इज़ हार्डली 9 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ विच इज़ A plot area is approximately around 2900 square feet, जिसमें कि फ्रंट इसका 52 है और डेप्थ इसकी 55 है। While getting inside the property आप देख सकते हैं कि a huge parking space, जो हर एक बंगलो की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, a parking space। और यहाँ पे एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी डेवलप किया गया है, जहाँ पे एक रूम ये है इनिशियल स्टेज पे, जहाँ पे एक सिट आउट है। प्लस on the other side this is the main office area, जहाँ पे एक good amount of staff can be sit out space, plus there is a 2 washroom inside the property. So while moving forward, the best part of this property is कि it's a corner property, it's a corner bungalow, 2 side entry है इसमें, on the other side also, which is directly getting into the kitchen. This is the main entrance of the property. This is the main entrance of the property. While getting inside the property, इसमें the best part is कि lift का भी option दिया हुआ है. A branded lift is there. Lift along with the power backup. So अगर आप देखेंगे इस property का, the USP of this property is the lift. क्योंकि इतने बड़े विलास में लिफ्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर ब्रांड की बात करेंगे तो ओटिस इज द ब्रांड विच हैज बीन यूज्ड। पर्सन बेसिकली 6 person लिफ्ट इज देयर, अ गुड साइज ऑफ लिफ्ट। सो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, सो G+3। सो वाइल गेटिंग आउट ऑफ द लिफ्ट से बाहर आते साथ आप देख रहे हैं, this is the center area which you can see is a dining space, plus this is the front view of the property. This is the front facade of the elevation of the building. This is the sit out space. Stairs से आएंगे तो एक sit out space वो भी है, plus on the that side there is a powder washroom also which is connected to the dining space. A beautiful powder room. अगर आप bath fittings की बात करेंगे तो Jaguar fitting has been used. Moving forward, this is the main living area, a beautiful living area with a huge front balcony, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक टफन ग्लास के यूज हुआ है, जर्मन विंडोज यूज हुई है यहाँ पे। बेसिकली इट्स अ यूपीवीसी स्लाइडिंग विंडो विच इज़ अ 3-track यूपीवीसी विंडोज। मैं अगर बात करूँगा डोर्स की तो डोर पैनलिंग, a good quality of wood has been used. On the top of the wood there is a good amount of veneer has been used. This is the beautiful space of the villa which is the, you can say as a mandir space. बहुत beautifully designed हुआ है। The property which I am showing you, it is going to be handed over like this only. This is the first room on the ground floor. This is the first room on the ground floor. You can see the ACs also are put up. This is the dressing area. Along with the dressing area there is the attached lead bath. जैसे कि मैंने आपको बताया, all bathrooms has been put up by the brand Jaguar. While moving forward, the most important thing for the ladies is the kitchen. This is the well-designed kitchen with a chimney. Along with that, there is a huge amount of utility area is there, the washing utility area, and the door that you can see is basically the servant entry. यहाँ से servant की एक entry है। एक island kitchen you can say, बीच में एक island बना हुआ है। Good amount of work has been done in the kitchen. Good amount of storage is there. A good size. अगर आप और ऊपर चीज देखेंगे तो एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड अप विद द फॉल सीलिंग, लाइट्स। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं, फुल वेंटिलेशन इज देयर। CNC की ग्रिलिंग हुई है इसमें, हैवी ग्रिलिंग हैज बीन डन। मैं आपको अभी ऊपर लेके जा रहा हूँ स्टेयर्स के थ्रू। अ ब्यूटीफुल ग्रेनाइट हैज बीन यूज्ड हियर आल्सो ऑन द स्टेयर्स। अगेन दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस
which is the lobby area. This is the, you can say, the OTS which is coming from the down till up till the stairs. आइए, moving forward, this is the first room along with the dressing area, along with the false ceiling, AC and attached led bath. Every room has been done so nicely with a good amount of interior work has been done inside the property. आप सारी जगह पे देखेंगे तो different kind of a mica has been used. A huge bungalow. Sorry for the inconvenience, थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे. Plus again this is the second room on the first floor. Room along with the attached led bath. Every room is having a different touch. So this was the second room. While moving forward, this is again the master bedroom, which is having the front view. You can see the view also from here. A big road, nothing is coming up in the front. So it's having a beautiful view from here. This room is also having an attached dressing area and the attached led bath. Sorry. जितना भी आपको wooden work दिख रहा है, that has been the top quality of wooden work has been done with a good amount of it's all waterproof wood. Again on that a good quality of veneer has been used. You can see the wall textures also there has been used. This is also one of the master bedroom which is having a little smaller balcony but the good size of room. Again the false ceiling work has been done in every room. This is the dressing area and the attached led bath. अगर आप बालकनी में देखेंगे तो टफन ग्लास का काम हुआ है. अगर आप कबर्ड्स में देखेंगे तो हर एक डिफरेंट पैटर्न्स का कबर्ड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एन इंटीरियर्स. इफ यू टॉक अबाउट द स्विचेस आर ट्रेंडिंग which is going on in the market right now, which is the beauty of this house. Again we will take a lift. आप देख सकते हैं इस एरिया को भी, which has been covered nicely with the granite. Now we are going on the second floor. So basically ground floor we have showed you. This is the, now we are going to the third floor. Sorry, we are going to the third floor. Total it's a 8 BHK property. This is the third and the top floor of the property. अगर आप on the right side देखेंगे लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद तो there is a hall which has been kept for a gym area or yoga room or whichever way, a kids room you can use it, or a small party gathering also. जैसे कि नीचे था on the top also there is, on the third floor there is a room along with the again the cupboards has been given up. अगर वॉशरूम की बात करेंगे तो there is an attached led bath. While moving forward, that is the, on the third floor, that is the second room. इसमें हर रूम में आप देखेंगे तो ग्रिलिंग का काम हुआ है, सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए गए हों इस प्रॉपर्टी में. इट इज़ अ फुली वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी. अगेन अ गुड अमाउंट ऑफ कबर्ड्स हैज़ बीन कवर्ड अप. अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ वर्क विच हैज़ बीन डन. While moving forward, there is one more room on the third floor. This is the master bedroom on the third floor, which is again facing the front facade with a huge balcony. अगर मैं लॉक्स की बात करूँगा तो गोदरेज के मोटराइज्ड लॉक्स हैं in all the areas. This is the dressing area. This
दिस इज़ द ड्रेसिंग एरिया। अगर लॉक्स की बात करूँगा अगेन, इट्स ऑल मोटराइज्ड लॉक्स, गोदरेज मोटराइज्ड लॉक्स आर देयर, ड्रेसिंग एरिया एंड द अटैच्ड लेट बाथ। And again this is the front side, so it's all German windows which has been used, a UPVC windows which is having a 3-track with a mosquito net. So that's it from our side basically. Abhishek Arora this side signing off. It's a 8 BHK 3000 square feet on a very prime location. For site visit or for more queries, you can contact us on the given link and the contact number. Thank you very much. Thank you for watching. Keep sharing.